Okay, now I got it. Yeah, now see here, just this is pure discussion. We'll write a proof. So 512 even sets are there. So obviously half of these sets will be not good sets. Okay, and this many will get good sets. Okay, so some of them is divisible by 4, some of them is not divisible by 4. Now what you do is there will be some elements, this many sets represent what? They have a 2 belonging to good set and 2 belonging to not good sets. Okay, so this region is not good set. Na? This region is not good set, this part bounded by this particular line. Okay, so if I want to color and just give you a very clarity of understanding, that means I'm coloring this much area. This much area is basically not good sets. Okay, and this much area is good sets. So there will be good sets which contain 2. Okay, there are good sets which contain 2 and there are not good sets which contain 2. Yeah, so both kinds of sets we are having here. Okay, now if I see here, if I actually analyze this particular problem, I'll get this as, let's think about it. Okay, there is one catch. I think we missed it. Just see here. Yeah, see the statement of the set of the problem. Just see here. A good set is a set if its elements belong to these elements, Okay. So, uh, can we say null set is a good set? Can we say null set is a good set? It is not a good set, no? Okay. And its element sum is 0 by default, and it is divisible by 4. So I have to remove this set from the overall calculation only. Okay, so this doesn't make sense. I just saw that. I hope everybody is clear. You have to write it here. Okay. No, I is not a good set. Okay. And since pi is not a good set, so now this argument will get even s also out of the discussion. So now see here. Now see here. If A is a even set, if A is even set, then S minus A is odd set. Therefore, by this logic, even we are forced to remove A. A means, sorry, we are forced to remove S from this entire discussion. You know? Why? Because its complement vis-a-vis this calculation phi is not there actually. I hope this makes sense, guys. If A is the even set, then S minus A is odd. So for A phi हुआ तो ही S odd set होगा ना, तो A odd set में भी नहीं है A. Okay. Therefore, just listen to this discussion now. Total even sets is equal to 1024 minus 2 by 2 होगा. क्यों? क्योंकि even sets बनने के लिए टोटल 1024 में हम लोग क्या करेंगे, पाई को निकाल रहे हैं, बट पाई को निकालने के चक्कर में ए भी निकल जाएगा. ओके, ए एक्चुअली क्या है, ए इज नॉट अ गुड सेट. ओके, पाई इज अ नॉट, पाई तो नॉट गुड सेट है, तो उसका सम डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 4 है, बट ए क्यों नहीं है, सॉरी एस क्यों नहीं है गुड सेट, बिकॉज उसका सम जो है 55 एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ओके, दैट्स द रीजन व्हाई एस इज नॉट देयर. But while calculating total number of even sets,
व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ इवन सेट हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 5 को भी निकालना है और a को भी निकालना है, और डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आर इवन सेट, हाफ ऑफ देम आर इक्वल टू ऑड सेट, इसलिए -2 करना पड़ेगा। आइडियली -1 करना चाहिए बट -2 करेंगे क्योंकि हाफ द सेट्स बना रहे हैं हम लोग, और इवन में से 5 तो निकल ही गया, इसलिए 5, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो इसको, ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको डिवाइड बाय 2 किया और -1 किया, ये -1 क्यों किया, 5 के लिए। एम आई क्लियर विद दिस गाइस? तो ये कितना आएगा, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 जार 4, -1, तो 511 इवन सेट्स है हमारे पास। इज दैट ओके? अभी हमने क्या किया, ये 511 इवन सेट्स है यहाँ पर, वी आर हैविंग 511 इवन सेट। यहाँ तक सबके लिए क्लियर है? आई होप एवरीबडी इज क्लियर, दिस कैलकुलेशन इज क्लियर गाइस? एनीबडी हैज एनी डाउट? आदित्य इज क्लियर? Adit, are you clear? Ronak, Yes, sir. Adit, yeah, okay. Ronak is also clear. Sahaj, Navya, Yes, sir. okay. तो ये 511 इवन सेट्स आ गए अभी, हाँ। तो मैंने इवन क्यों बनाया, क्योंकि 4K एक्चुअली इवन के अंदर आएगा। तो अभी मैंने क्या किया, सारे 511 इवन सेट्स यहाँ पे लिखे, इसमें से इतने जो है गुड सेट्स हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, इतने नॉट गुड सेट्स हैं, और कुछ में 2 है और कुछ में 2 है बट वो नॉट गुड सेट्स में है। ओके, अभी ये देखते हैं, देखो अभी ये मैकेनिज्म देखो, आई एम सेटिंग अ मैकेनिज्म, ओके, एंड द मैकेनिज्म इज व्हाट, इफ अ सेट k, if a good set k has 2, then remove 2 from good set k, ओके। तो k में से, k सेट में से अगर 2 निकाल देंगे तो हमें k डैश आएगा इज अ नॉट गुड सेट। आप समझ रहे हो क्या लॉजिक है यहाँ पर? देखो ना क्या किया मैंने, अगर मेरे पास एक सेट है, गुड सेट है, इफ अ सेट गुड सेट, इफ अ सेट, इफ अ गुड सेट के, सेट नहीं आना चाहिए, इफ अ सेट which is a good set by the name k has 2 belonging to this k, okay, then what we are doing, remove 2 from this good set k and create a k dash which is actually k minus 2 element. Now what is this k dash? K dash is not a good set. Are you getting the point which I'm making here guys? को फंडा समझ में आया? कि कोई k सेट अगर है और k कहाँ पे लाई करेगा, देखो k के अंदर 2 है, k हैज अ 2 है ना, तो k जो सेट है हमारा वो यहाँ लाई करेगा इस रीजन में, ओके। हमने उसमें से 2 निकाल दिया, ओके। 2 निकालने के बाद अभी ये k डैश सेट बन गया, और ये k डैश अभी 2 निकालने के बाद क्या बन गया, नॉट गुड सेट ही होगा ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर कोई गुड सेट है, फॉर दैट मैटर सपोज करो ये गुड सेट देखो, है ना, 5 6 7 8, तो इसका टोटल सम 8 है, ये मेरा के गुड सेट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 निकाल देता हूँ, तो मुझे जो सेट मिलेगा वो 1 और 5 है, तो इसका सम 1 + 5 6 हो गया, मतलब ये 4k + 2 हो गया। नॉट गुड सेट्स आर ऑफ द फॉर्म 4k + 2 एंड गुड सेट्स आर ऑफ द फॉर्म 4k, ओके। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो कोई भी गुड सेट अगर तुम लेते हो, उसमें से एक मैकेनिज्म हमने सेट किया कि हम लोग 2 निकाल देंगे, अगर 2 निकालेंगे तो 4k + 2 बनेगा और 4k + 2 4k बनेगा, ओके। तो ये मैकेनिज्म से क्या हुआ कि कोई भी के सेट अगर मेरे पास है तो उसका मैं के डैश बना दूंगा, ओके। और ये के अगर यहाँ पर है तो के डैश इस रीजन में चला जाएगा बाहर, ओके। अभी ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि इफ 2 बिलोंग्स टू अ सेट m वेयर m इज अ, अच्छा, इफ 2 डज नॉट बिलोंग टू m, ठीक है, वेयर m इज अ गुड सेट, कि अगर मेरे पास कोई गुड सेट है अभी m जिसमें 2 नहीं है, तो मेरा मैकेनिज्म क्या करेगा, पुट 2 इन सेट m, सो हमें क्या मिलेगा, m यूनियन 2 डालने के बाद एक m डैश सेट मैंने क्रिएट किया, इज अ गुड सेट। अब समझे क्या हुआ?
तो अगर मेरे पास इज नॉट अ गुड सेट, तो कोई गुड, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई तो एक गुड सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, 1 और 7 एक गुड सेट है एम। अब इसमें 2 नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक नया सेट बनाया एम डैश, जिसमें मैंने 2 ऐड किया। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये गुड सेट बन गया अभी, क्योंकि इसका सम देखो ना, 7 8, नहीं नाइन नहीं, ये नॉट गुड सेट बन गया, सॉरी, 7 8 9 10 बनेगा, पहले 8 था अभी 10 बन गया, तो इट इज एम डैश इज नॉट गुड सेट, है ना। ज्यादा नहीं लिखता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल्स है इसको समझाने के। तो अभी क्या हुआ देखो, एम कहाँ पे लाई कर रहा है, एम यहाँ पे लाई कर रहा है जहाँ पे 2 तो नहीं है, इस जगह पे ना, इस जगह पे 2 नहीं है ना, क्योंकि 2 इस रीजन में ही है सिर्फ सेट के अंदर। अगर एम यहाँ पे लाई करेगा तो एम डैश अंदर चला जाएगा, ये लॉजिक है, क्योंकि यहाँ के सेट्स में ये नॉट गुड सेट भी है और 2 भी है उसके अंदर। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा है सेट थ्योरेटिक डायग्राम में? इज इट ओके अनंत, आर यू क्लियर विद दिस मैनिपुलेशन और Sir, मैकेनिज्म? can you explain the first part again? आई एक्सप्लेन। देखो क्या है मन में, हम लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, देख पहले तो ये समझ लो कि ये फिगर में क्या क्या बना है। तो इस फिगर में क्या क्या बनाया है मैंने, वो उस पे ऊपर पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा सेट बनाया, जिसको ये जो सारे सिर्फ इवन सेट्स है। ओके, इवन सेट भी दो तरह के होंगे, इस तरफ कौन सा सेट आएगा, जो कि गुड सेट्स है, यहाँ पे सारे गुड सेट्स हैं, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट्स, यहाँ पे जो जो सेट्स है ना, उनके एलिमेंट्स का सम हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट था गुड गुड सेट के लिए। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे जो सेट्स है ना, वो सारे वो सेट है जिसका सम ऑफ द एलिमेंट्स 4K नहीं आता है, 4K+2 आता है, क्योंकि इवन नंबर्स दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो 4K या तो 4K+2। ओके, तो ये दो जगह है जहां पर मैंने ये सेट्स को रखा है। और बीच में ना ये रीजन क्या है पता है क्या, ये वो सारे सेट्स हैं, ये वो सारे सेट्स हैं, ये वो सारे सेट्स हैं यहाँ पर जिनमें 2 एलिमेंट है। ओके, अगर 2 एलिमेंट वाले सेट अगर यहाँ पर है, तो ये बाहर वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे जिसमें 2 नहीं है, ये समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, अभी जब ये दो चीजें समझ में आई, तो अब मुझे बताओ ये कौन से सेट्स हैं। ये वो सेट्स हैं जो गुड सेट्स हैं और जिनमें 2 भी है। ओके, ये वो सेट है जिसमें गुड सेट, ये गुड सेट नहीं है और इसमें 2 है। ये वो सेट है जिसमें 2 है, सॉरी 2 नहीं है और ये गुड सेट भी नहीं है। और ये लास्ट रीजन ये है जो गुड सेट्स भी हैं और उनमें 2 भी है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो 2 होना या नहीं होना, और गुड सेट होना और गुड सेट नहीं होना, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज के 4 रीजन्स आ जाएंगे। So two इज इट as in ओके? 2 एज इन एलिमेंट 2। okay, sir. And why I'm focused on using this element 2, because element 2 के होने या नहीं होने पे 4K या 4K+2 सम आएगा ना उसका, इसलिए 2 पे फोकस कर रहा हूं मैं। अभी कोई अगर गुड सेट है उसमें से मैं 2 निकाल दूं, तो वो 4K+2 बन जाएगा ना सेट। अगर कोई गुड सेट, कोई अगर नॉट गुड सेट है, तो वो ऑब्वियसली 4K+2 फॉर्म का सम रहेगा उसका, तो उसमें से 2 को निकाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, गुड सेट बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो अभी यहाँ पे फिर Yes, से sir. एक्सप्लेन करता हूँ, देखो, अगर कोई गुड सेट है के जिसमें 2 एलिमेंट भी है, तो वो के मेरा कहाँ पे दिखेगा तुमको, यहाँ पे दिखेगा, Yes, sir. क्योंकि ये रीजन वो रीजन है जहाँ पे 2 भी है सेट के अंदर और वो सेट गुड सेट भी है, बराबर। Yes, sir. अब मेरा मैकेनिज्म क्या बोलता है, मेरा मैकेनिज्म बोलता है कि 2 को निकाल दो, क्योंकि उसके अंदर 2 है, 2 को निकाल दो। तो जैसे ही यहाँ के सेट में से 2 को मैं निकाल दूंगा, तो अभी वो नॉट गुड बनेगा और नॉट कंटेनिंग 2 वाला सेट बनेगा, तो वो यहाँ चला जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Understood. तो अभी वो क्या बन जाएगा, वो के डैश बनेगा। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, मैंने बेसिकली क्या किया है मैं बताता हूँ। यहाँ के हर एक सेट को मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ, और यहाँ के हर एक सेट को मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ, आप समझे? Yes, sir. ओके, तो अभी देखो ना, अभी क्या हुआ, कोई भी एम सेट अगर मैं लूं, वो एम सेट यहाँ पे लाई कर रहा है, क्यों यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि वो गुड सेट तो है बट उसमें 2 नहीं है, क्योंकि बाहर लाई कर रही है। अब उसमें अगर मैंने 2 दे दिया, क्योंकि उसमें 2 नहीं है, तो मैं उसमें 2 डाल दूंगा, तो अभी वो नॉट गुड भी बनेगा और 2 कंटेनिंग नॉट गुड बनेगा, मतलब यहाँ चला गया वो। देखो ना, एम यहाँ पे है तो एम डैश अंदर है,
Yes, Is it sir. very clear? Therefore, can we say for every m there exists a m dash and for every k there exists a k dash, बराबर? ये हमने प्रूव किया ना? Is it okay, guys? Yes, sir. बट अभी इसमें एक ही कैच है, देखो एक ही कैच है. The only exception is, can you tell me the set which has this exception? जो यहाँ पे दोनों जगह या चारों जगह पे नहीं होगा वो सेट, मतलब होगा बट उसका उसका ऐसा कोरस्पॉन्डेंस नहीं बनेगा कि यहाँ का एलिमेंट यहाँ मैप हुआ, यहाँ का एलिमेंट यहाँ मैप हो रहा है. ऐसा एक ही सेट होगा जो इस मैपिंग से बच जाएगा. कौन सा एलिमेंट है वो? सोच सकते हो कौन सा सेट होगा वो जो ऐसे मैकेनिज्म से बच जाएगा? Sir, a set containing only Set two. two. द सेट कंटेनिंग ओनली टू. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी देखो ना, ये सेट को, ये नॉट गुड सेट है ना एक्चुअली. ये कौन से सेट से बनेगा रे? ये कौन से सेट से बनेगा ये मैकेनिज्म के अंडर में? अगर ये मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता टू पे तो ये कौन से मैकेनिज्म से बनता? हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड सेट पे ही मैकेनिज्म लगा रहे हैं ना. तो अगर ये एरो इस तरफ जा रहा है तो ये एरो इस तरफ भी तो आ रहा है ना, पीछे भी तो आ सकता है ना ये मैकेनिज्म का एरो. तो मुझे बताओ, अगर नॉट गुड सेट दिया है तो उसको गुड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको चलाएंगे ना रिवर्स डायरेक्शन में, ये पहले स्टेप को, कि अगर रिमूव टू करेंगे तो वो गुड सेट बन जाएगा. तो इसमें से अगर रिमूव टू करेंगे तो क्या बन जाएगा मुझे बताओ? नल सेट बनेगा ना? Yes, अरे sir. नहीं. और मुझे एक चीज बताओ कि क्या नल सेट गुड सेट है? इज नल सेट अ गुड सेट? अगर ये नॉट गुड सेट है कंटेनिंग टू, मतलब नॉट गुड सेट कंटेनिंग टू, मतलब टू सिंगलटन टू सेट यहाँ पे लाई करना चाहिए, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए? वो यहाँ बाहर जाना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली नल सेट तो हमने पहले ही निकाल दिया ना डिस्कशन में से, क्योंकि वो गुड सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? तो Yes. टू ही वो सेट है जो क्या बोलते हैं उसको, ये मैकेनिज्म को सेटिस्फाई नहीं करता है और इसलिए ये सिर्फ अकेला नॉट गुड सेट है. तो देयरफॉर listen carefully, 2 is the only not good set which has no good set in the mapping or under the one to one correspondence. Correspondence defined above. अब मुझे बताओ कि टू कौन से तरह का सेट है रे? गुड है या नॉट गुड है? नॉट गुड है ना, है कि नहीं? तो यहां से हमने एक चीज तो प्रूव कर ली कि हर एक हर एक गुड सेट नॉट कंटेनिंग टू के लिए नॉट गुड सेट कंटेनिंग टू मिलेगा, और हर एक गुड सेट जो टू कंटेन करता है उसके लिए नॉट गुड सेट कंटेन, आई मीन नॉट कंटेनिंग टू मिल जाएगा, है ना? तो ये दोनों तो इक्वल नंबर में. सिर्फ एक सिंगलटन टू सेट है जो नॉट गुड सेट है और वो यहाँ लाई कर रहा है, बट उस बेचारे का यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है. आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझे? तो इसका मतलब टोटल गुड सेट्स कितने आएंगे? 511 इवन सेट्स है. उसमें से अगर मैं एक कम कर दूं, ये कौन सा एक कम कर रहा हूं? सिंगलटन वन वाला सिंगलटन टू सेट जो है, वो ऐसा एक सेट है जो मुझे कम करना पड़ेगा क्योंकि उसका पैर वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. और वो 511 में से कम करके डिवाइड बाय टू करूंगा तो टोटल गुड सेट्स आ जाएंगे मुझे, क्योंकि जितने गुड सेट्स हैं उतने ही नॉट गुड सेट्स हैं आउट इन दिस 511 सेट्स, एक्सक्लूडिंग this singleton two set which is a not good set. यहाँ पे कितना आएगा? 510 divided by 2, so 2 to the 4, 2 5 are 10, 2 5 are 10, so total good sets कितने आएंगे? 255. तो ऐसा कुछ तो जुगाड़ आपको करना पड़ेगा गाइस ऐसे प्रॉब्लम्स में. Do I make sense?
ये पूरा वर्किंग समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो प्लीज. You can say that this is a good INMO problem also. Is it okay? Sir, can you explain that singleton set again? या श्योर. देखो ना, अभी तुम्हारे पास तुम्हें ये समझ में आया कि हमने इवन सेट्स क्यों सोचा, वो समझ में आया. Yes, sir. Yes. क्योंकि इवन सेट्स की वो सेट है जिसके अंदर गुड सेट्स भी बैठे हैं और नॉट गुड सेट्स भी बैठे हैं. करेक्ट. और Yes. नॉट गुड सेट्स में और भी सेट्स होंगे जो हमारे काम के नहीं है, वो हमने पहले ही निकाल दिए, जो ऑड सेट्स हैं. ओके. तो अभी गुड सेट्स में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको गुड सेट और नॉट गुड सेट में अगर मुझे मूव करना है तो मैं क्या करूंगा, इवन सेट्स टोटल जितने हैं उसमें आधे गुड सेट्स हैं, आधे नॉट गुड सेट्स हैं. दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग विच कम्स आउट ऑफ 511. ओके. अब मैं अगर ये देखूं कि अगर मेरे पास कोई भी के गुड सेट है तो उसको मैं एक कोरस्पॉन्डिंग नॉट गुड सेट के साथ कनेक्ट करता हूँ. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया ना, देखो टोटल इवन सेट्स कितने हैं 511, जिसमें से ये पार्ट जो है ये गुड सेट्स का पार्ट है. ओके. मैं इसको जी से रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे जो है वो नॉट गुड सेट है. ओके. अब ये गुड सेट है मतलब इसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या आएगा 4k, इसका आएगा 4k+2. ओके. अब मैं क्या करता हूँ ना, एक मैकेनिज्म सेट करता हूँ एफ. अगर मेरे पास कोई ए सेट है गुड सेट में तो इसका इमेज जो है वो मुझे आएगा ए डैश बिलोंगिंग टू नॉट गुड सेट. ये एक मैं ऐसा डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ. ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग एग्जाम में, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो इनमो में. सो लेट अस डिफाइन, ऐसे लिखेंगे, let us define a mapping from G set to G dash set. तो F क्या है, G से G dash में एक मैपिंग है. ओके. सो इस मैपिंग के अंडर में क्या होता है, कोई भी A को लेते हो और आप इसको A डैश में कन्वर्ट करते हो. बट A डैश और A में क्या रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप है. इफ 2 belongs to A, okay, then what we do is then A dash is equal to A minus 2. सीधा सीधा हिसाब है ना. अगर एक गुड सेट है तो ये 4k सम आएगा इसका. अगर उसमें 2 अगर है तो उस 2 को मैं निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ नॉट गुड सेट. दिस इज क्लियर बेली. Yes, sir. This part I इस understood. तरह से मैं, हाँ अभी देखो, अगर 2 डज नॉट बिलोंग टू ए है then I am creating a dash which is actually adding this to and it becomes a not good set. तो ये मैकेनिज्म से क्या हुआ, जितने गुड सेट्स हैं उतने ही नॉट गुड सेट्स हैं. बट ये जो सेट है बिलोंगिंग टू नॉट गुड सेट इज द ओनली एक्सेप्शन. ओके. इट इज singleton set 2 belonging to G dash has no set which is mapped from G to this element. Are you getting it? तो कोई भी ऐसा सेट नहीं मिला है अभी मुझे कहाँ पर, यहाँ पर, जो यहाँ से 2 डैश आई मीन सिंगलटन 2 को मैप कर सके. वही हुआ यहाँ पर कि अगर मेरे पास कोई k अगर है, f ऑफ k मुझे क्या आ रहा है, k डैश आ रहा है, वेर k कंटेन्स 2. अगर 2 यहाँ पे 2 के अगर सेट्स लिखे हैं हमने तो k यहाँ पर है जिसके अंदर 2 है तो k डैश बाहर चला जाएगा. और अगर f of m is equal to m dash है where m does not contain, रिवर्स लिखना चाहिए, where 2 does not contain in m, then m कहाँ पे है, m यहाँ पर है, 2 नहीं है इसके अंदर और वो मैप हो रहा है m डैश के साथ. बट अभी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ यही एक 2 जो सेट है वो यहाँ पे लाई करेगा ना बेली, Yes, sir. है ना. एक मिनट, 2 सेट यहाँ पे नहीं लाई करेगा, मैंने गलत दिखा दिया उसको, यहाँ लाई करेगा. बराबर. वो डाउट है क्या तुम्हारा, मैंने शायद उसको यहाँ दिखा दिया, यहाँ नहीं आएगा वो यहाँ आएगा, है ना.
क्योंकि टू Yes, sir. बिलोंगिंग टू जी डैश है ना वो, ठीक है। तो टू टू सिंगलटन टू इज द ओनली सेट विच इज नॉट गुड सेट बट कंटेन्स टू। अब इसका अगर मैं मैपिंग करने जाऊं तो इसका मैपिंग तो यहाँ आएगा, करेक्ट। कि जो सेट अगर है जिसमें अगर टू ऐड कर दूं तो यहाँ मिलेगा वो, बट अनफॉर्चुनेटली ये सेट को क्या बनना पड़ेगा, नल बनना पड़ेगा ना, अगर इसको मैप करना है तो। और ये नल तो है ही नहीं गुड सेट में, इसको निकाल दिया है। इसका मतलब ये एक ही सेट है जो अनमैप्ड है एक्चुअली। आर यू फॉलोइंग दिस? Yes, sir. है ना। तो जितने बाकी सब एलिमेंट्स इक्वल नंबर में लाई कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे 11 एलिमेंट्स है। 11 क्यों? क्योंकि सिंगलटन टू भी है वहां पर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब अगर यहाँ पे अल्फा एलिमेंट्स है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? अल्फा प्लस वन। इसका मतलब अल्फा प्लस वन इज कमिंग आउट टू बी 511। अभी ठीक है। इसका मतलब अल्फा कितना आएगा? 511 माइनस वन बाई टू, विच इज कमिंग आउट एज 254. इज इट वेरी क्लियर? इज दिस फाइन? Yes, sir. Huh? Everybody is clear. Nave is also clear. Meg is clear. Okay. Jash is clear. Yes, sir. Okay. So this was one of the best problems in this paper actually. Yeah. So can I move to the next problem now? Saraj, are you clear? Yes, sir. Okay. Now let us move ahead. And after this, the problems are very easy actually. So there was not much of a discussion in the questions. Still, we'll close them quickly. Yeah. Now, if you see this problem, if the number of different, somebody has messaged me something. Yeah, sure, Akshat, I'll do that. Okay. If number of different ways one can put into a bookshelf 7 numbered books of the same author, if number of different ways one can put into a bookshelf 7 numbered books of the same author, such that book number 2 is between books number 1 and 3 is what? So it is between 1 and 3. So between means I'll take that it is lying like this or it is lying like this. So book number 2 is between 1 and 3 and book number 2 is between 3 and 1. So both the cases are taken care of. Okay, and the other books are 4, 5, 6, 7 and 4, 5, 6, 7. So now what we do is we have to consider this as a single book. So we'll consider this as a single book. Okay, so one book, two book, 3, 4 and 5. So this will give me 5 factorial, and 1 and 3 can be interchanged among themselves in two ways. So this comes out to be how much? This comes out to be the answer 5k. Okay, so k will be equal to 4 factorial into 2, so 24, so 48. So k is equal to 48. I hope that is the answer to this problem. Yes. Is this clear? So this was very easy question, not at all challenging. And even the next question also was very simple. Yeah, such problems we have done in the initial classes. I think the first, second, third classes. Yeah, I hope this is very clear. Any doubt? Anybody wants to have any question against the solution in the 13th one? Sir, Yeah, Anand, tell me. sir, can it be like the first book in the start, the third book in the end, and the second book in the middle? Well, not actually. Between will be taken very seriously, you know. The word between I'm taking very seriously. Um, then you won't say that, it is between. You will say that, okay, fine, 2 has to lie after 1 and before 3. Like that makes more sense, no? Okay, sir. Okay, sir. No? Okay. Fair enough. Now let's come to the next question. If the number of different ways one can go from city A to city B and come back, if it is known that the ways for going and coming back do not include parts with the same numbers.
So there are numbers given to the roads. So for going and coming back, we don't use the same. So this also is a very simple problem. So 16p, if it is total waste, then that will be like while going, it will take 3 into 4 into 3. And while coming back, it will take 2 into 3 into 2. Because it will not repeat the routes. Na? Imagine he has gone like this by the first, then the second path, and the third path. The first path's only 1, 4, 8. Then he is not supposed to take 8, 4, 1 again, any of those. So it will be 9 or 10, 5, 6, 7, or 2 and 3. So it is 1, 1 place, 1, 1 value reduces. So this will be like p is equal to 4 and 4. So it is like 327. So 27 should be the answer for p. Yeah, that is correct. Is this fine? Any doubt, guys? Okay, now let's move on. Now see this problem, the last one, 15. Okay, if number of integer solutions of this equation is 15, such that it holds true for xi 1 and 3. So each of these xi's can take values from 1, 2, and 3. Small I, 1, 2, 3 to 7 is 7k. So I think this problem is very simple by binomial expansion, rather binomial, not binomial, generating function. So generating function, we can say that each of these will be represented by x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3, and 7 such contribution, each ranging from x1, x2, x3 till x7. And we have to find coefficient of x raised to 15 in this expansion. So if I take x raised to 7 out, okay, and we have to find 15 coefficient. So this will give us, and this will become x raised to 8. So we need to figure out coefficient of x raised to 8 in this expansion. So use binomial theorem, 1 minus x cube and 1 minus x. I hope you people remember geometric progression. How many terms are there here? N. Hence, 1 minus r raised to n upon this into a. So since the first term is 1 here, so a is 1 here. And 1 minus r raised to n, 3 terms, so power is 3. And 7 is the power which is coming as it is. So this will become 1 minus x cube raised to 7 into 1 minus x raised to minus 7. Now we'll expand this. So 1 minus 7 choose 1 x cube, 7 choose 2 x raised to 6, 11 choose 3 x raised to 9. So this will not contribute, but still I'm writing it. Okay, so more terms will come, but we are least bothered about it. Why? Because इसके आगे के terms का कोई sense ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो x raised to 8 का coefficient ढूंढना है. तो ये आगे का terms लिख के फायदा भी नहीं है. और इस terms का क्या होगा? 1 plus 7 choose 1 x, 7 plus 7 choose 2 x square, and so on. Okay, so now we have to search for x raised to 8. So what you do is you start from the highest degree here. Okay, so x raised to 6 किससे multiply होगा? 7 choose 2 x raised to 6 multiply होगा x square के साथ, तो आपको x raised to 8 देगा ना, करेक्ट? सो x square का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है? x square कोएफिशिएंट 7 choose 2, यहाँ पे 7 choose 2 आएगा, फिर x cube मल्टीप्लाई होगा जिसमें माइनस है, सो 7 choose 1 x cube will get multiplied with x raised to 5 there, you know. यहाँ पे x raised to 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x raised to 5 का क्या होगा? नीचे 5 आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस दोनों में सब जगह पे 6 है, तो 6 का डिफरेंस लेंगे तो 11 आएगा. ओके,
और लास्टली ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के x रेस टू 8 के साथ, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा x रेस टू 8 के साथ, तो 8 आएगा यहाँ पर और 6 का इंक्रीमेंट होगा, 6 अगर इसमें इंक्रीमेंट करें तो 14 आएगा. सो देयरफॉर द कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 7 choose 2 into 7 choose 2, okay, minus, Sir, it should be 8 choose 2 for error. where you're saying Coefficient of x square. coefficient Sir, of 8 x choose 2 square, for अरे x अरे square. हाँ, correct correct correct, it increases by 1 na, so 8 choose 2, yeah, 8 choose 2, thanks. So this should be 8 choose 2, 7 choose 1 into 11 choose 5 plus 14 choose 8, okay. So this is what we get as the value, and now you have to calculate this. So if you calculate this, I have calculated the value already, and that comes out to be, just a second, where have I calculated this value? Yeah, in my iPad, just a second. Used the software actually, that comes out to be 357. Yeah, so this value comes out to be 357, okay. And what have they given us? This is equal to 7k, so 7k is equal to 357, which gives me k is equal to 7535, so 51. So this is the answer to the problem. I hope this makes sense. Anybody has any doubt in here? Yeah, you're right actually. My mistake actually, because it has to always increase by 1. I hope that is clear to all. Is it fine? Yeah guys, is it fine? Yes, sir. So ये generating function याद है ना सबको, generating function Yes, sir. problems के उसमें से तो याद आ भी गया होगा, right? ठीक है, so this paper is done. Now let us go to the next work, which was, I gave you one activity, a daily practice sheet, right, on greatest integer function. Have you worked that out, guys? It is very important for the pre-RMO. They Yes. may ask one question at least on greatest integer. So have you worked it out? How many have worked it out? Can you raise hands, please? Okay, good. 3 people. What about others? Okay, Meg has worked it out. Nakul has worked. Anand, good, good. Very nice. Just has worked it out. Akshat, Devam, Adit. अभी vacation में भी time नहीं है. Navya, have you tried it? I'm telling you, try it out or not. Then only it is fun to listen to the discussion. Adit, have you haven't tried it? Sir, I didn't get most of it. You didn't get the sheet? No, sir, not many. I mean, only few. Acha, you didn't get means you didn't get the answers, you're saying, right? Yes, That is okay. I'm saying that have you tried it? yes, sir. Yeah, that is exactly what I'm asking. Navya, have you tried it? I'll give you a start. Okay, few of them I'll solve, then together we'll solve this sheet. So first of all, some of them are very good properties for us. You should know those properties if you want to go for packing problems in INMO or even in pre-RMO. Okay. So before I start, I'll just list down few properties here. So greatest integer is basically n if x lies between n and n plus 1. Okay, this is the definition of greatest integer function. So greatest integer, it is also denoted like this, or and it is also denoted like this. Huh? So this is called the floor function. It is also called as floor function. Okay, floor function means you try to find that
this. The floor means lower value. So lower value to 3.2 is 3. Lower value to minus 3.2 is minus 4 on the number line. If you write a number line like this, 3.2 के नीचे कौन सा integer है 3. Okay, और minus 3.2 के नीचे कौन सा integer है minus 4. So नीचे ही जाता है वो. That's why it is called floor. It is denoted like this, like a floor ऐसे. Okay, there is another function called a ceiling function also. Ceiling function क्या करता है, ऊपर के integer को देता है. Okay, so remember that also. Ceiling is what? जैसे 3.2 का ceiling क्या होगा, 4 होगा. Okay, is it okay guys? Ceiling of 3.2 क्या होगा? Fingers are used to it. Ceiling of 3.2 क्या होगा, 3 होगा. Okay, sorry, 4 होगा. और greatest integer of 3.2 क्या होगा, 3 होगा. Okay. 3 Ceiling of minus 2.2 क्या होगा, -2 -2. और floor of minus 2.2 क्या होगा, -3. Okay, just remember this. This is called as floor and this is called as ceiling function. Okay, but they will ask only floor function, which is called greatest integer function, which is also called as greatest integer function. Now if you see here, so greatest integer is defined as this. Moreover, there is one more definition which is useful, that is greatest integer. I mean, any real number x is bifurcated as greatest integer function, and in curly braces they define this is called as the fractional function. Okay, then the next important property is that greatest integer is always less than x, and it is bounded, any x is bounded by greatest integer above and greatest integer plus 1, greatest integer below and greatest integer plus 1 above. Okay, so I suggest that you remember only this much part, that the greatest integer is always less than x. Okay, that comes from here. See, this n is nothing but greatest integer and x is this. Okay, and then you add 1 into it and write this upper bound also. Or if you want to bound greatest integer, then you can say that greatest integer is bounded above by x and below, इसमें से एक 1 subtract कर लो तो lower bound आ जाएगा, उसके नीचे greatest integer नहीं जा सकता. ओके, अभी इन्हीं को यूज करके एक कंडीशन आता है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल फंक्शन lies between 1 and 0, and that is also not very difficult to see. It is very obvious from here, क्योंकि हमें पता है from this argument we get definition that fractional function is x minus greatest integer of x. Okay, so from that, if you take this greatest integer that side, so x minus greatest integer is greater than equal to 0, which comes this. And if you use this, x minus greatest integer, 1 will go that side, will give you this. I hope this is very clear, what I just showed you. Is this fine? ये कैसे आता है? It's not a Yeah. big deal. Yeah. Now, once you know these things, now you're free to build more ideas, which I have given in the sheet. Okay. Like for example, we have to show, even this we have done as a property only. Just a second, guys. I'll have some water.
Now see here, once you know, the next property is, which we have posed as a problem or a lemma, that greatest integer of x plus n is greatest integer of x plus n, where n is an integer. So how can you work this out? You first see what is the bound over x. Okay, we have to use the definition only, which is stated above. This is the definition for us. Okay, so what I do here is x is greater than x is less than greatest integer plus 1, and that is coming from here. Property which I told you to remember, this one, this part here. Okay, and if I add 1 into it, sorry, n into it, then it will become greatest integer of x plus 1 plus n. Okay, now what I'm doing is, if I add no, just a second, not this. I'll directly take x plus n is less than greatest integer plus n, coming from here, this compared with this, and plus this is one condition which I'll get, and the other condition is x is greater than equal to greatest integer of x, and x plus n, if I add, I'll greatest integer of x plus n. Okay. Now just see here, and greatest integer is lying here, so this is true. Okay, and now if I actually use both these conditions, what are the conditions which I'm going to use? This quantity is less than this quantity. Okay, and this same quantity is lying between this. So if I combine these two conditions, I'll get x plus n is lying above plus 1 and below by. So if I talk about this greatest integer of this quantity, it will obviously boil to this one, because these are consecutive numbers. So if x plus 1 is lying between two consecutive integers, then greatest integer of this number has to come out to be greatest integer of n plus n. Okay, so it's purely application of these 5 things what I've written above, always. Okay, so this was problem 1, or rather property 1. So remember henceforth that greatest integer of 2.3 is greatest integer of 2 plus, sorry, you remove the integer part, so you can write this as 0.3 plus 2, and this is 0.3 greatest integer plus 2. Okay, so the integer part you can always get out while solving problems. That is what it means. Let me keep it as it is. Okay, so this was first one. Let us go to the second one now. In the same lines, if I want fractional part of x plus n is equal to fractional part of x. Okay, so if I try to do fractional part of x plus n, it comes out to be this. So this will come purely from the fact that x plus n fractional part is equal to x plus n minus greatest integer of x plus n, which is equal to x plus n minus greatest integer of x plus n of the above property. Greatest of x plus n is equal to this, where n is a integer. Okay. Now x and greatest integer, this n and this n will cancel. So x minus greatest integer of x will come out to be fractional part, which is true. Okay. So you should be able to prove these things if you want to crack problems. By way of solving them, the lemmas, you are actually becoming stronger. So like this one, see, m plus 1 by n, the third one, has to be proved less than or equal to. So this trick which we are going to use here may be useful in some problems. That's why this problem is important. So m plus 1 by n is less than or equal to greatest integer of m by n, whatever fraction it is, plus 1. Anyone proved this one?
Yeah, guys. Any of you? So in short, if you actually see here, what we have to prove is m plus n is m by n plus n. This is what we have to prove, right? This particular structure. Now, what we can do is, we know that greatest integer of m plus n, okay, plus 1 is, you think about this, huh? I'm trying to use this. Just listen to my argument that x is bounded by greatest integer of x plus 1 above and below by greatest integer of x. So I'll try to exploit this particular thing here. Okay. So what I do is m by n plus 1 is less than m by n. Okay. And we want a 1 also. Yeah. Okay. And second thing. Yeah. Now see here. We have this. We know this condition. What is that? A greatest integer. We know x is bounded by greatest integer plus 1 above and below it is bounded by this. We know this, right? Okay. So let x be equal to m by n. So from that we'll get, use only this much part. Let x be equal to m by n and use only this much part. So you'll get m by n is less than m by n greatest integer plus 1. Okay. And then what you do is you multiply by n throughout here. You will get m less than n times m by n plus n. Okay. And add a 1 on both sides. So we'll get n m by n plus 1. Okay. Moreover, you are having below by m by n. So this will become n times m by n. I won't use this. Yeah, now you have got this. And now this condition, see, both sides are integers. Okay. If m minus 1 is less than this integer, so here, right side, this is used quite often. Okay. Right side is an integer and left hand side is also integer. Okay. If both sides are integers,
Then, like for example, if n1 is less than n2, so can I say n1 is less than n2 minus 1? Can I say this, guys? Can I say this? Hmm? If both of these are integers and I have x is less than 2 है suppose करो और दोनों भी integers हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ x is less than or equal to 1? Can I say this? क्योंकि x तो less than 2 ही है ना तो equal to 2 तो नहीं हो सकता है but equal to 1 हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है इसलिए ऐसे लिखेंगे. Can I say this? Is it okay, guys? So from this, can I say m plus n is less than or equal to n m by n plus n? Okay, now divide by n again. So m plus 1 by n is less than. Is this fine? Just have a look at it, please. Try to understand what I've done. I've just done a bit of work here based on the properties I knew, and then I used the same thing here to prove it. But the biggest important gain here in the problem is this knowledge. If both sides are less than, I mean integers, then you can reduce the right hand side or increase the left hand side depending upon where your variable is lying. Are you getting the point, guys? Anant, is it clear? Yes, sir. Okay, fine. Now let us move ahead and take up the next one. So the next one is to prove this one. Greatest integer of x plus y is less than or equal to. This is this. How to remember this? This is opposite of triangle inequality, if you recall. So greatest integer function or greatest integer of x plus y can be equal to lower bound x plus greatest integer of x plus greatest individual greatest integers also and individual plus one also. Yeah, that's the beauty of it. Okay. Yeah, but then what is triangle inequality? Alpha plus beta is greater than like mod alpha plus mod beta is greater than equal to alpha plus beta. So the individual mods are greater. Here the individual greatest integers are lesser actually. वैसे याद रखो मतलब just for there is no logic coming from a triangle inequality, but it is opposite of triangle inequality. That also helps you to remember it in the first and not always reduce. I hope that is clear. Now how to prove this one? Yeah. So what do you suspect? How should we go about proving this? Any ideas? I can write this as greatest integer of x plus y is less than equal to greatest integer of x rather x plus y. Yeah. And then if I apply greatest integer on both the sides. So just think about this. One more property if I suggest you. If x is less than y, then can I say greatest integer of x is less than equal to greatest integer of y? Can I say? Can I say this, guys? Like for example, x is less than 2.3. So can I say x is less than equal to 2? Greatest integer of x is less than equal to 2. Can I say that? Because even if x is 2.2, its greatest integer will fall back to 2 only. No? So can I say greatest integer of x is less than equal to greatest integer of 2.3? That is what it means. No? So Yes. greatest integer of x is less than equal to greatest. So this is something
which will help us to solve problems. If we apply greatest integer on a inequality, strict inequality, then it may become equality also. Yeah. So we may try to exploit that here. So I can write it like this. Greatest integer of x plus y is less than equal to x plus y. This is coming from property. Greatest integer is always less than equal to its real value. Okay. So this both compared, I added y on both the sides. I can start the proof like this. We know greatest integer of x is less than equal to x. On this, we add y on both the sides to get this. And now, if I apply greatest integer on both the sides, okay, this will become what? This will come from above. Okay, any real number plus integer, greatest integer of x plus n. It is greatest integer of x plus n. Can we say that? Yeah, can I say this? There is the color. So this I am using at this stage. Let rather not this one. I've used the blue one. After this, I'll be using it. At this stage, I have used this concept. I applied greatest integer on both the sides. Okay, so this will become, now it will become greatest integer plus greatest integer of y is less than equal to greatest integer of x plus y. So this side is proved, one side. Okay, now we need to prove this side. So how can we go about that? How can we set this side? So this side is done of the part. Now we have to set this particular part. Any idea? Yeah, that should be simple. X is less than greatest integer of x plus 1. Can I say this? We know this from the property, na? X lies between, x is always less than greatest integer plus 1 and greater than greatest integer. You recall this property? I told you, na, those 5 properties. Yes. It's coming from there. And y is greatest integer of x, sorry, greatest integer of y plus 1. Add these two inequalities. I'll get x plus y is less than greatest integer of x plus greatest integer of y, okay, plus 2. Can I say? Yeah. And from this, I can say that x plus y, okay, x plus y is less than great. See, both sides are integers now. Okay, one side. Also, I know that also greatest integer of x plus y is less than equal to x plus y. Can I say this? This is the usual. Oh, yes. Also, greatest integer of x plus y is less than or equal to x plus y. I can use this property here. Greatest integer always less than equal to x. No? But this is less than this quantity here, which is given. Correct? Okay. But now we can say that is less than. Can I say this? Comparing this and this. But now since left hand side and right hand side are integers, left hand side and right hand side are integers, I can say greatest integer of x is, this can go a little left. Will it make sense? Even this part is over. I hope this makes sense. So from 1 and 2, we can combine this two and say it is done.
Any doubt in this, guys? Is it okay? Sir, all these are lemmas, right? Yeah, these are lemmas, but you cannot remember them. You can only be aware of them. I'm not expecting you people to by heart them, but you should remember them. Does it make sense? Yes, sir. Okay. Now, as an application of this, we might see one problem, but I'm not sure whether it will get over in 5 minutes. Okay, you may try this problem. The problem is, just a second. As an application of this problem, there is a problem which we may try to solve. The question is why these lemmas are important. Prove that for mn natural number, prove that mn natural number m plus n choose divides 2m choose m into 2n choose n. Okay, we have to divide this. Now, if you see the proof, I think you really understand why I am proving this lemmas. So if you see here, you can see that this is nothing but m plus n factorial divided by m factorial n factorial, correct? This quantity, and we are saying that this quantity divides 2m factorial divided by m factorial the whole square and 2n factorial divided by n factorial the whole square. I hope that makes sense of the question. Okay, so can I say that if P is a prime divisor of m plus n choose n, okay, then we have to say that number of p's, or rather, just think about this. No? Just think about this. It is just like asking 18 into 20 is divisible by 15, you know. So 1 5 may divide this and 3 may divide this. So in short, this if I factorize, I'm getting 3 and 5 prime numbers. So 3 should be there. Number of 3's here should be less than number of 3's added here and here. Do you agree with this, guys? तभी तो डिविजिबल होगा ना. अगर यहाँ के 3's ज्यादा हो गए इन दोनों के 3's से, then there is a problem. Are you getting the point, guys? Are you getting the point? So for this to happen, this division to happen, that is, this is an integer. Always choices are integers only, na? Number of ways of doing. So if p is a prime number, okay, if p is a prime number, then number of p's in m plus n choose n, okay, should be less than number of p's in 2m choose m plus number of p's in 2n choose n. Does everybody agree with me? And this should happen for every p prime. Any p prime, this should always be true. Do I make sense? So number of p's in this, how do we get it? How do we get number of p's in this? So we have a formula for that, na? Number of p's will come out to be m plus n by p plus m plus n by p square. You recall this? m plus n factorial में कितने p's आएंगे? तो इसमें कितने p's होंगे? इसमें p's होंगे this plus this, okay, minus m by p. ये नीचे वाले में कितने p's होंगे? वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. माइनस नीचे ये वाले में भी p होंगे, वो भी सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे.
I hope this is making sense. This number of p's should be less than यहाँ के जो p's आएंगे 2m by p 2m by p square ऐसे infinitely चलेगा ये minus twice m by p square ऐसे सीरीज चलेगा। ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे m फैक्टोरियल स्क्वायर है तो इसमें m फैक्टोरियल में भी पीस आएंगे और नीचे के m फैक्टोरियल और एक m फैक्टोरियल में पीस आएंगे, वो दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगे। ओके, ये होना चाहिए प्लस 2n by p 2n by p स्क्वायर ऐसे माइनस 2 टाइम्स n by p ग्रेटेस्ट इंटीजर n by p स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है ना आपको नंबर ऑफ प्राइम्स ढूंढने का? तो ये होना चाहिए। ओके, अब अगर आप ध्यान दो तो ये कैसे होता है, कैसे दिखता है देखो। ये जो पूरा है इसको मैं एक तरफ लेके आता हूँ। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा? ये 2m by p रेज टू k। अरे यार ये तो ऐसे चलता है ना। टू मिनट्स मोर। अभी देखो, ये जो पूरा सीरीज है इट विल कम आउट टू बी समेशन 2m by p रेज टू k का ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम माइनस यहाँ का एक ट्वाइस और यहाँ का एक, देखो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरफ आएगा तो। सो माइनस समेशन m by p रेज टू k, ओके, माइनस n by p रेज टू k का समेशन। ओके, ये माइनस हो जाएंगे सारे और यहाँ पे 2n भी आएगा प्लस 2n by p रेज टू k, ये वाला प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस कर दिए मैंने। ओके, अगर मैं इसको आगे कर लेता हूँ और इनको पीछे कर लेता हूँ। ओके, आई हैव डन दैट बिहाइंड। और ये जो क्वांटिटी है राइट में उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, शुड बी ग्रेटर देन 0, ये आना चाहिए क्योंकि मैंने ये पूरे सीरीज को इस तरफ लेकर आ गया। सो दैट इज टू प्रूव दिस। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से, ये समेशन जो है ये कॉमन अगर लेंगे हम लोग तो 2m 2n, तो इसको 2x कॉल करते हैं, m by p रेज टू k को x कॉल करते हैं, इसे 2y कॉल करते हैं, माइनस x कॉल करते हैं, इसको y कॉल करते हैं और x प्लस वाई कॉल करते हैं ग्रेटर देन 0। तो मुझे एक्चुअली क्या प्रूव करना है? x प्लस वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर इंडिविजुअल प्लस, दोनों माइनस है, प्लस x प्लस वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर is greater than or rather less than 2x plus 2y। ये हमको प्रूव करना है। Yes, sir. Okay, so will that actually facilitate from here or we need some other lemma for this sake? No, we need one more lemma which will come from this only. But I was just trying to tell you that if in order to solve this problem, we need these lemmas. फाइनली ये पूरा बॉइल डाउन होके ये लेम्मा को प्रूव करने जैसा ही हो गया। तो ये भी मैंने शीट में शायद दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट चेक द शीट वंस गाइस। लेट मी चेक, वेट, I have it open. So it is 11th one, if you see. Are you getting the point? So problem was this, but this finally boiled down to proving this greatest integer function. Are you following the point, guys? Do I make sense? Yes, sir. Yeah, so we'll carry from here, guys. Yeah, it is 11. I'll stop on time. Some people have requested me to stop on time. Okay, is this clear?
So please now continue working all of them. I'll share one more paper which we have to discuss on Tuesday. Have I said Monday we have a class? On Tuesday, sir, now. On Tuesday. Okay, fine. So you have 2 days. You have Monday, tomorrow's day. Actually, tomorrow is Monday. No, I'm sorry. So tomorrow's day you have to take up one more paper. Even Tuesday morning till afternoon you can take that paper and we can discuss it on Tuesday. Okay, Okay, sir. Yes, sir. Sure. fine. Fine, guys. I'll stop here. Thank you very much. Bye, sir. Thank you. Good night. Yeah. Bye bye. Bye bye. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Vidin. Bye. Bye, Navya. Bye. Bye, Anand. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Bye, guys.